नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Dear student, Assalamu alaikum. Good evening. Today we will discuss four atoms. The first one is grammar, the second one is alphabet, and the third one is word, and the fourth one is sentence. So first we take a start from grammar. It is the ways through which we write correct English and day-to-day life. But we also speak very well. This is grammar. When we know the grammar, through this grammar we write the English very well as we speak the English very well. You have knowledge what role English play in day-to-day life. If your English is good, you will communicate very well in the world. Anywhere you will find the job very easily, and anywhere in the world you get admission anywhere in the world university. So English has great role in the development of a world, because if you English is spoken in all the world country, if you do any business with any country, so if your communication English language is good, so you will communicate very well and you will get the business very well. So therefore it is necessary student to know the grammar and speak the English very well and write the English very well. If your English improve, through this way you will pass every exam very easily anywhere in the world, and very easily you will find the job, and you will improve your socio-economic condition very good, with the help of which your family will be developed, and through your family development the country will also be developed. So this is the role of grammar. If your grammar is good, so you will speak very good English. So you try for grammar seeking. If you learn the grammar, through this way you will speak very well, and in the society all people will salute you. So I request to all to practice of English, of speaking and writing. Second number, alphabets. It is
the basic unit of English language. It is the basic unit of English language which start from A to Z. Example: A, B, C, and Z. Now we come to word. When more than one alphabet unite it make the word. The word. Now word has been completed. Words has two types. Some words have meaning and some word has no meaning. So it is your duty to improve your vocabulary of the word because it plays a great role in English writing and speaking. If, for example, there is a person, he is good carpenter or good mason, but if they have no material, then it is impossible that they make the house. But here also, if you have no word vocabulary, through then your English speaking is impossible and your English well writing is also impossible. Therefore, I request to you to read the book, identify the words, and learn it by heart. If you have more word, through this way you will speak very easily in the word because more vocabulary improve your English. If your vocabulary is more, because of this, you will speak very easily. Now we come to sentence. It is a group of words which give complete sense. Example of word: he writes, he goes to Mardan, I eat. These are the sentence which we speak in daily life. Today, in next lecture, inshallah, we will discuss part of
sentence. Now we want to explain these things in Urdu. ग्रामर एक ऐसा मशीन होता है, ऐसी टेक्निक होती हैं, ऐसे तरीका होता है जिसके थ्रू हम सही इंग्लिश लिख सकते हैं. अब अल्फ़ाबेट जो है ये बेसिक यूनिट होते हैं, इसको हम हुरूफ तहज्जी कहते हैं. और ये हुरूफ तहज्जी उर्दू लैंग्वेज में भी होती है. हर ज़ुबान में पहले उसके हुरूफ तहज्जी होते हैं. इंग्लिश के जो हुरूफ तहज्जी है ABCZ, अगर हम हुरूफ तहज्जी को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो फिर भी हम सही इंग्लिश नहीं बोल सकते, न राइट कर सकते हैं, न स्पीकिंग कर सकते हैं. बिकॉज उसका प्रोनाउंसिएशन भी मतलब है याद करना जो है ज़रूरी है कि आप ए को किस तरह अदा करेंगे, सी को किस तरह और जेड को किस तरह. और ये मतलब मुंह से जब हम निकालते हैं तो ये किस तरह हम उसको निकालेंगे. तो ये अल्फ़ाबेट का एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, ABC to Z. अब वर्ड जो है when more than वर्ड, अगर एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट मिल जाए तो वो हमें वर्ड बनाता है. सम वर्ड के मीनिंग होते हैं और सम के मीनिंग नहीं होते. तो इस मकसद के लिए तुम्हें वो मीनिंग वाले जो वर्ड्स है जिसको हम कलमा कहते हैं उसको याद करना चाहिए. और जिसको हम मोमल कहते हैं उर्दू में, उसको आप ज़्यादा याद न करें, क्योंकि जो मीनिंग वाले अल्फाज है वो आपके काम आएगी और डे टू डे लाइफ में हम उसको यूज़ करेंगे और इसकी मदद से आप सही इंग्लिश और सही तरीके से स्पीकिंग और राइटिंग करेंगे. अब हम आते हैं सेंटेंस की तरफ. तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. ग्रुप अल्फाज का ग्रुप होता है और इस ग्रुप में जब वो हमें कंप्लीट सेंस देता है तो फिर हम उसको सेंटेंस कहते हैं. सेंटेंस की बहुत टाइप्स है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट ऑफ सेंटेंस को पढ़ेंगे. तो इसके लिए भी पार्ट ऑफ सेंटेंस को जो है आप पहले से याद करें और उसके लिए डेटा नेट से डाउनलोड करें, रीड करें. और इंशाल्लाह जब हम अगले लेक्चर में हम आएंगे तो इंशाल्लाह हम दोबारा उस पर डिस्कशन करेंगे. लेकिन जो चीज़ें आज मैंने आपको डिस्कस की तो उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है. आप उसकी प्रैक्टिस करें और उसको क्लैरिफाई करें. और अगर जहाँ पे आपको कुछ तकलीफ़ हो तो आप कमेंट्स करें और आप मुझे सही तरीका बताएं कि किस तरह मैं आपको पढ़ाऊँगा. ये तो मैंने सिंपल सा तरीका आपको बता दिया कि सबसे पहले ग्रामर शुरू होता है और फिर ग्रामर में अल्फ़ाबेट्स होते हैं और फिर वर्ड होता है, फिर सेंटेंस होता है. और इसी तरह ये सारी चीज़ें जब आप कवर करेंगे तो इंशाल्लाह योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव्ड और आप ज़िंदगी में कामयाब भी होंगे और कोई आपके साथ कंपेट भी नहीं करेगा, ना इंटरव्यू में, ना कोई एडमिशन में, ना कोई एनीवेयर. आपको वर्ल्ड में अगर जॉब अवेलेबल हो तो इस इंग्लिश के थ्रू आप सही अटैक कर सकते हैं और आप सही तरीके से लाइफ में ज़्यादा अचीवमेंट ले सकते हैं. तो ये था मेरा क्लास टुडे के लिए. वस्सलाम. थैंक यू वेरी मच ऑडियंस.